atom has completely filled the orbitals in this ground state, but it can also exhibit +2 oxidation electronic configuration. क्या होता है 4s0 which is partially filled. ठीक है, Cr+3 कितना होगा Cr+3 है क्रोमियम का होता है 24 - 3 तो 21 यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 pm का होता है 61 61 58 cu का होगा cu की चीज़ करके जाना c कॉपर प्लस कॉपर प्लस कॉपर प्लस यानी कि z होगा 29 - 1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 ठीक है। इसको मैं ऐसे ले सकते हैं कि आर्गन का 3d10 ठीक है। Mn+Mn2+ का जो ये होता है एटॉमिक नंबर वो 23 होता है और Fe का 24 होता है और Mn में जो 1 पेयर होता है वो 5 होता है और Fe में 6 होता है। तो Mn मोर स्टेबल है ड्यू टू द हाफ पेयर ऑर्बिटल्स और Fe2 इज कंपेरेटिवली लेस स्टेबल। Fe का उतना 26 - 2 कर लेना ठीक है और Mn का 25। When d orbitals are half filled completely filled in oxidation is stable ठीक है। जैसे कि कॉपर का अगर देखोगे तो कॉपर का 29 होता है तो कॉपर का 29 स्टेबल नहीं है लेकिन कॉपर का 28 स्टेबल है। वैनेडियम 3d3 4s2 का वैनेडियम करता है 2 3 4 5 क्रोमियम करेगा 3 4 6 कोबाल्ट करेगा 3 2 और 3d4 एग्जिस्ट नहीं करता। Silver atom has completely filled the orbitals 4d10 in its ground state, but it can also exhibit +2 oxidation electronic configuration पता है जी +2 का होता है कितना 4s0 3d9 which is partially filled. Silver atom has completely filled the orbitals in its ground state, but it can also exhibit +2 oxidation electronic configuration of Ag+2 is 4s0 3d9 which is partially filled ठीक है। Name the oximetal anion of first transition metals in which the metal exhibit the हाँ तो MnO4 का जो ग्रुप नेम है और ऑक्सीडेशन नंबर 7 है Cr2O7 2 और Cr4 2 दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है ग्रुप नंबर 6 है। Silver atom has completely filled the orbitals in its ground state, but it can also exhibit +2 oxidation electronic configuration हमको पता है Ag+2 कितना होता है 4s0 3d9 जो कि partially filled होता है ठीक है। और ऑक्सीमेटर बताना है जिसका ग्रुप नंबर और ऑक्सीजन नंबर सेम है तो MnO4 ठीक है और Cr2O7 2 और Cr O4 2 Cr2O7 2 और Cr4 2 मैग्नेटिक मोमेंट होता है N+2 KMnO4 +2 है यानी कि 1 अनपेयर होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है और मैग्नेटिक मोमेंट 5.83 है यानी कि 4 होगा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ठीक है। Element of first transition series composes different property from those of why element of first transition series have different property from those of heavy transition element. Heavy transition elements belong to the 4d 5d and 6d and different from 3d क्यों है क्योंकि atomic radii of the element belonging to 4d 5d are more due to the electron shells because of strong interatomic bonding. Bp and mp of those 4d and 5d are greater. Ionization enthalpies of 4d and 5d is less than those of 3d. Why element of first transition series possess different properties from the heavier transition elements. जो heavier होगा वो 4d 5d 6d है और 3d से डिफरेंट क्यों हो पूछे एटॉमिक रेडाई के बारे में कि 4d 5d का बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक शेल की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होता है। प्रोमेथियम pm होता है जिसका 61 है प्रोटैक्टिनम pH z होता है 21 मेंडेलियम का 101 मेटेनियम का 109 ठीक है। What is the difference between
actinoids and lanthanoids. 5f orbitals, ये forward orbital, ये 3 4 5 6 7 करता है और 3 4 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका 3 है बट कभी कभी 2 और 4 भी शो कर देता है लैंथेनाइड्स में। ये मोर रिएक्टिव ड्यू टू बिगर एटॉमिक साइज एंड लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये लेस रिएक्टिव है। Element of first transition series composes different property from those of heavier transition element, because heavier transition elements belongs to 4D, 5D and 6D and different from 3D. The atomic radii of the element belonging to 5D are more due to electron shell, because the strong interatomic bonding BP and MP of those of 4D and 5D are greater. प्रोथीनियम का देखो, मेंटेलियन का 109 है, मीट्रेनियम का क्या है, मेट्रियम का 100, मेंडेलियम 101, प्रोटैक्टिनियम का 91 और प्रोमीथियम का 61। अब प्रोमीथियम जो है वो ज़ीनॉन की तरह दिखाता है, प्रोटैक्टियम रेडॉन की तरह दिखाता है, बाकी सब रेडॉन है। अब देखो 5f2 61 7s2। हुंड्स रूल से Z28 होता है, CE का Z58 होता है, तो ज़ेनॉन 4f1 5d1 6s2 होगा। लेकिन अगर हम CE+3 करेंगे तो वो ज़ेनॉन 4f1 होगा। While lanthanoids shows limited number of oxidation state, lanthanoids show limited number of oxidation 2 3 4. This is because of large energy gap between 4f 5 and 6s special. The dominant oxidation of actinoids is +3, but they also show different. This is because of a small energy gap. The Havelock element in which the last electron enter F shell are called inner transition. This include lanthanoids and actinoids. The F-block element in which the last electron enters into F subshell are called inner transition metal. ठीक है, लास्ट ठीक है, लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड 58 to 71 है और एक्टिनॉइड्स 90 to 103 है। Analyze homogeneous mixture of two or more metal or non-metal. The lowest oxide of transition metal is basic. The highest is amphoteric acidic, because the metal atom has low oxidation state, whereas the high one are acidic due to the high oxidation state, जैसे कि amino is basic and amino 27 is acidic. Element of first transition series composes different properties from those of heavy transition element. Heavy transition element belongs to 4D, 5D and 6D and different from 3D. Element of first transition series possess different properties from those of heavy transition element. Heavy transition element belong to 4D, 5D and 6D and different from 3D. The atomic radii of the elements belonging to FD and 4D are more due to electron shells, because of strong interatomic bonding. Boiling point and multi point of those of 4D and 5D are greater होता है. Ionization enthalpies of 4D and 5D is less than those of 3D. I think Lanthanoids show a limited number of oxidation state 2 3 4. This is because of large
energy gap between 4f 5f60. The dominant oxidation state of actinoids is 3, but they also show because of the small energy gap between them. ठीक है. एनालाइज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल. मिश मेटल में अलॉय आता है, सीरियम आता है, लेंथेनम आता है, आयरन आता है, ट्रेसेस ऑफ कार्बन आता है, सल्फर होता है, एल्यूमिनियम होता है, एक्सेट्रा. द लोवेस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक and the highest is amphoteric or basic acidic, because the metal atom has low oxidation state, where the higher ones are acidic due to high ऑक्सीडेशन स्टेट. एमएनओ के पास लो बेसिक है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए वो बेसिक, और Mn27 एसिडिक है. ठीक है. A transition metal exhibit highest oxidation state in oxide and fluoride, because oxygen and fluorine are highly electronegative elements, small in size and strongest oxidizing agent. Oxonium of metal have highest oxidation state due to the combination of the metal with oxygen, which is highly electronegative. Disproportionate reactions are those in which the same substance undergoes oxidation as well as reduction. Oxidation number of an element increases as well as decreases to form two